Hi, everybody. Good afternoon. This is Shifali Chopra, and today I have a fantastic guest with me. Special. It's International Women's Day, so happy International Women's Day to all the women out there. Today I have with me a very powerful woman, Venu Agrahari Dhingra. Well, she does not really need any introduction, but I must say that she's an author, social entrepreneur, social worker, a photographer, a wild life enthusiast is what I can say. She's experimenting so many new things in her own life. She is quite an interesting person, and we will unfold her story in the most sincere, honest fashion. Because I think एक कहानी दूसरी कहानी से जुड़ती है, कोई ना कोई कड़ी होती है. एंड जब मैं वेनु को पहली बार मिली थी, लेट मी स्टार्ट विद दैट यू नो इट्स बीन क्वाइट अ वाइल. And when I met her for the first time, I really thought, my God, she is different. And it stayed with me till today. And I always feel that, yes, she's a very different person. Well, I have this beautiful book in my hand. It's called The Power Woman. And I have been reading this, and this is the book written by my friend. I can call her my friend, Venu Dhingra. So, hi Venu, I'm so happy that we are actually, this session is happening today on such a special day, Women's Day. And इससे अच्छी बात हो नहीं सकती थी कि आज तुमने मुझे हाँ कहा और आज हम यहाँ हैं. Uh, Thank you, Shipali. What an intro by you. Uh, that was just not needed because actually we are great friends. And yes, I think our friendship goes, what, 15, 20 years? That's lovely. And आज के ज़माने में friendship को maintain करना भी बहुत बड़ा task है, but we both probably clicked. I also found you very, very different in a town like Dehradun. I found you very different, and that is probably why that link was maintained. That's true, Yeah. Venu. हम लोग ज़्यादा मिले नहीं, but you know, whenever we met, I think we picked it up from where we left. Yes, absolutely. है ना? And in any Um, relation, I think that is very important to pick up from where you leave. it's very important, really important. Yeah. आज इतना खास है, you know, when I think about women who matter and who are changing the lives of so many people or who have changed lives of so many people, you know, you really come to my mind, Venu. And I'm sure कि जो कहते हैं ना शुरुआत के बीज जिनको कहते हैं, we are all seeded at some time or the other जब हम छोटे होते हैं. And let me take you back in time when you were growing up, the place you came from, the most important influence in your life. Of course, I read it all in the book. I mean, there is a, let me say, you have put bits and pieces of your heart in this. This is a fantastic book which we will talk about. But the thing is, you know, when I see the way you have written it, I know that a lot of inspiration comes to you from your dad. And of course, he's very close to your heart. He may be a bit far, but very, very close still. And कुछ bond होते हैं जो कभी नहीं बदलते. I really want to travel in time and look at the little Venu. So let's hear your story from there, Venu. I want to know when you were growing up, did you grow up very independently, or there were certain biases when you were growing as a child? Because let's not forget, International Women Day का topic भी ये है, break the biases. So let's kind of weave our thing through this. बताओ वेनु अपने बारे में. Uh, Little Venu. That's a very Yes, good question. And I actually go back in times. Little Venu was very fiery, very independent, very vocal. And as you must have read my book, I just hope you read the chapter of Phulan Devi. It is one of the chapters. And I belong to Bundelkhand. एंड वहां पे जब भी कोई बिकॉज वो वही टाइम था फूलन देवी जब डेकॉइट थी तो एनी वुमन हु वाज वेरी इंडिपेंडेंट एंड जो बहुत वोकल थी उसको फूलन दीदी कहा जाता था. अरे ये तो फूलन बनेगी बड़ी होके.
Of course, not in the terms of dacoit, but yeah, ये rebel बनेगी. Basically, Phulan Devi was a rebel. That is how Right. she did what she did. तो मुझे भी फूलन बोलते थे लोग. तो but as you said, मेरे father का बहुत important role था. He actually brought me up like a third son. I was the third, one and only daughter, but before me, my two elder brothers are there. वो मुझे बहुत इंडिपेंडेंट तरीके में बड़ा किए, अनलाइक द अदर गर्ल्स. He let me study, he let me do what I wanted, but of course with his limits again, because he was a father, he was a man who came from a village. तो उनको भी एजुकेशन का मतलब पता था. तो आई वाज द फर्स्ट गर्ल टू गो टू अ इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्रॉम माय फैमिली. Wow. एंड बट 7 o'clock की लिमिट, वो जो एक उस जमाने की होती है, आई थिंक सारी लड़कियों ने शायद ये देखा होगा या कहो झेला भी होगा. आज हम अपनी लड़कियों को शायद ऐसे नहीं बड़ा कर रहे हैं. पर पापा जब भी मम्मी बोलती थी कि इसको किचन में इसको ले जाते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो माय फादर, मुझे आज भी उनका याद है कि कहते थे नहीं, किचन में तो हर लड़की जाके कुछ ना कुछ कर ही लेती है, वो उनके जीन्स में होता है, बायोलॉजिकली होता है उनका, या वो कर लेती हैं. सुई धागा एक लड़की कोई ना कोई कर लेती है. बट आई वांट टू टीच हर बुक्स कैसे संभालना है, बिजनेस को कैसे संभालना है, बिकॉज़ ही वाज़ अ बिजनेसमैन फर्स्ट एंड देन अ पॉलिटिशियन. तो पापा मुझे जैसे ही मैंने शायद 10th या 11th या 12th के हॉलिडेज में, आई डोंट रिमेंबर स्पेसिफिकली, पर वो मुझे ऑफिस ले जाते थे और मैनेजर्स के साथ बैठवा के सिखवाते थे कि बैंक को कैसे संभाला जाता है, बुक्स को कैसे. तो वो मुझ में एक वो साइड उसी समय से, ऑल थैंक्स टू माय फादर, आने लग गया था. देन ही नेवर स्टॉप्ड माय मदर और मी आल्सो टू गो एनीवेयर, ट्रैवल अलोन. हैंडल करो, सीखो बेटा, सीखो. दुनिया कब क्या परोस देगी तुम्हारे सामने तुम्हें नहीं पता. और वही शायद एक हर लड़की को सीखना चाहिए कि कब क्या परोस दिया जाए आपके जीवन में. नो आइडिया. व्हाट कितना भी सीख लो, पर कुछ और आपके लाइफ में आता है जो आपको कुछ और सिखा के चला जाता है. Out of syllabus. Totally. Life is a different exam from what we learn in school. जो एग्जाम्स हम देते हैं वो कितने काम आते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बट लाइफ के एग्जाम्स बहुत फर्क होते हैं. That's so true. That is so true. But you know what is interesting in this? How your father wanted you to learn so many things. That is a very Absolutely. interesting aspect. Very So I think he that's a big contribution in your life. and again as I said, जैसे किसी भी लड़की जो भी होती है उसका कंट्रीब्यूशन उसके फादर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है. I definitely have dedicated this book to my father, but I feel मतलब ये कहना बहुत लाजमी है मेरे लिए, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, कि हम तो इसका क्रेडिट देते हैं, बहुत ओपनली देते हैं कि हम आज जहाँ भी बैठे हैं, जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर्स थॉट्स, हिज थॉट प्रोसेस फॉर मी टू शेप मी अप. That definitely goes to a man behind me, and that is my father. The credit goes to my husband and my son also, but definitely to the men behind, yeah. But on this day, I'll definitely like to say कि it's high time we give credit to ourselves also, कि हमने उस सोच को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. True. So as women, it's high time we start giving credit to ourselves, कि हम हमको जहां तक सिखाया गया उस सीख को हम आगे कैसे बढ़ाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी वुमन, कि वो That's कॉन्फिडेंस लेके वो आगे बढ़े ही बढ़े. वो बहुत जरूरी है अब लाइफ में. That's very well said, you know, Venu. हम लोग बहुत दायरों में रहते हैं. We are trained to be living in boxes. You know, कई बार हमें हमें सोच कहती है कि शायद ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होता होगा, बट आई डू नॉट एग्री टू दैट. यू नो, आई थिंक यू वुड ऑल्सो लाइक टू contribute on this because you have seen so many women around you. You know, एक 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 सोसाइटी की तरफ से हमारे लिए एक दायरे लगा दिए जाते हैं. आई डोंट नो इफ दे आर राइट और रॉन्ग, एंड वी keep judging women much quicker than we will judge any man. Would you agree with me? Absolutely. Absolutely. That's what I said. Uh, Especially when Shafali, you and I were growing up, I'm sure एक फ्रेम था.
लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, वो सर्वगुण संपन्न वाली वो जो एक यू नो एंड आई ब्रोक इट. माय मदर टिपिकल बिकॉज शी वाज फ्रॉम हर 60s एंड 70s. बेटा डांस सीख लो, बेटा म्यूजिक सीख लो, बेटा कुकिंग सीख लो. और वो डांस मास्टर आ रहे हैं, मैं भगा देती थी बिकॉज इट मेरे बस की नहीं थी डांस सीखना. वो भजन सीखो. तो अरेंज्ड मैरिज के ज़माने थे वो सारे। तो वो जब लड़की अरे एक बायस में लड़की को गोरी होना है, लड़की को लंबी होना है, लड़की को खाना बनाना आना है। अब पता ही नहीं था मुझे तो क्या करो तो किसी तरह हम लोग उस बायसेस को तोड़े। फिर आई केम फ्रॉम अ वेरी वेरी सिंपल इलाहाबाद फैमिली. Let me say it. I came from a land of jalebis and barfis to a land of pies and pastries, a land of being called Didi and Bhabiji and Namaste, to land of sweetheart and darling and but and we had to learn. We were supposed not to judge and learn. अब ये तुम्हारा घर है, ये ऐसे तुम्हें जीना है. तो women were asked to adapt at the age of 21, at the age of 19, 18 to 25 जब भी उस जमाने में शादियां होती थी. बाय ऑल स्टैंडर्ड्स मेरी भी शादी, आई वाज अ बनिया गर्ल एंड शादी हो गई. तो उस जमाने में बड़ा लेट हो रहा था कि अरे पढ़ रही है अभी कब तक पढ़ेगी टाइप्स. एंड आई वाज गुड इन स्टडीज, आई वाज अ टॉपर. तो मुझे और पढ़ना था बट पापा ने कहा नहीं नहीं अब तो 23 की हो गई हो, बनिया लड़कियों को फिर लड़के नहीं मिलेंगे. दीज काइंड ऑफ द फ्रेम्स को हमें तोड़ के आगे बढ़ना पड़ा. शादी हुई, यहाँ डिफरेंट लाइफस्टाइल, हर लड़की को आई एम श्योर डिफरेंट लाइफस्टाइल से गुजरना पड़ता है. सो अडेप्टेशन, अडेप्ट करना, आई थिंक शिफाली, योर एंड माय जनरेशन ने जितना किया होगा वो हमें लगता है हमारी प्रीवियस जनरेशन तो ट्यून्ड थी. पर हम लोगों को पढ़ाने के बाद, लिखाने के बाद भी एक ये सोच के साथ बड़ा किया कि नहीं नहीं नहीं, निभाओ टाइप सिखा. तुमको वहां निभाना है, तुमको अडेप्ट करना है, वो तो करना ही करना है. इवन आफ्टर वॉट एवर यू हैव लर्न, सो अनलर्न एंड गो अहेड, वो वाली बात थी. True, I agree with you. You know, Venu, our times were different. Nowadays, when I see girls, they're quite independent, in their thought, in the way they're doing things. Things are changing. They're slow, gradual, but yes, they are changing. और मेन चीज है जब हम लोग आज भी वही वाली बातें सुनते हैं कि अगर लड़की काम कर रही है तो उसको घर का भी बैलेंस करना आना चाहिए, वर्क बैलेंस विद होम बैलेंस, and I think sometimes it gets tough on women. It really does. वो नए रिश्ते समझाना, उसके बाद उनको पहले जब हम छोटे होते हैं, हम अपने घर में सो कॉल्ड मम्मी पापा के घर में होते हैं, जब मर्जी जो चाहे कर सकते हैं. But when there is this transition that happens overnight, suddenly the responsibility comes on the women. uh, you know uh, Here I'll definitely like to add key role of a woman is very important while bringing up their children. Like when whatever I had a fantastic childhood, I had a fantastic upbringing by my parents, but वो जमाने फर्क थे. So no offense to my parents or in-laws, वो जमाना, उस जमाने की सोच, expectations फर्क थे. But when I brought up my children, मैंने दोनों को साथ बड़ा किया. मेरे बेटा और बेटी में ज्यादा फर्क नहीं था. सो मैंने उनको इकट्ठा, no, like my son also did the same things what my daughter did. I don't I expect my was about daughter to की ask कोई you that. एग्जैक्टली. सो इट इज एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जनरेशन के पेरेंट्स को जरूर लेनी चाहिए कि अपने बेटों को भी वैसे ही बड़ा करें. कल को वो भी हस्बैंड्स बनेंगे, फादर्स बनेंगे. दे शुड, जो वो खुद कर पा रहे हैं वही उनको अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करना चाहिए, रादर देन कि अगर कोई मेहमान आए. जस्ट फॉर एग्जाम्पल,
कोई मेहमान आए तो वाइफ को ही क्यों उठना है नाश्ता देने, यू कैन आल्सो गेट अप, तुम्हारे मेहमान हैं वो, एक तरीके से तुम्हारे घर में आए हैं। तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स जस्ट एग्जाम्पल, मतलब नॉट, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग ऑन एनीथिंग, बट दीज काइंड ऑफ स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल change the mindset of men and women and bring a change in the society in very small ways. Venu, these things are actually, people don't realize, but these things are not gender related. These are life skills of life. And these life skills Absolutely. are important for everybody. आई एम ग्लैड स्कूल में आजकल सिखा, अच्छे स्कूलों में तो जरूर सिखाए जा रहे हैं। आई एम ग्लैड काफी स्कूल इसको पिकअप कर रहे हैं कि लड़कों को भी खाना बनाना उतना ही आना चाहिए और लड़कियों को भी कारपेंट्री उतनी आनी चाहिए कि जब फंस जाओ तो लाइफ स्किल्स में ये सारा कवर होता है। बट आई एम ग्लैड दीज चेंजेस आर कमिंग, इट्स अ वंडरफुल चेंज, नो डाउट। Uh, of course, there is always a lighter side in our life, and I realize that you love traveling. And यस, according to me, traveling is actually an aspect or a chapter in life where person learns the most. यस, इट इज, So tell या। me something about your traveling, maybe a experience or maybe one holiday where you completely, has left a mark on your life. Share that little thing with us. So, as I said, my father never stopped me. I traveled by train from Allahabad to Bombay all alone for the first time when I was in class ninth, Oh because he my wanted to God. he wanted to teach me. As I said, he wanted to teach me things which anyone can do. तो उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लाइट बॉम्बे टू दिल्ली टू इलाहाबाद शुरू हुई। ही सेड टेक अ फ्लाइट, गो, कहीं फंसो। अगेन बहुत ख्याल रखते थे कि बीच में मुझसे लोग मिलने आ जाते थे, जिस शहर में गाड़ी रुक रही है वहां बता देते थे मेरी बेटी आ रही है तो उसका ख्याल रख लो। दैट वाज अ फादर्स दिस थिंग। बट व्हेन आई वाज इन माय मिड 30s, आई ट्रैवल्ड टू यूरोप ऑल अलोन and I was Wow. there for a month. I was there for a month. एंड ऑफ कोर्स आई वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, लेकिन उसके यहाँ से मैं 3-3, 4-4, 5-5 दिन के लिए अपने बैग पैक करके किसी जाके विलेज में रहती थी। बिलीव मी, ये सब कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई बुक में वो आपको नहीं मिलेगा। it is a kind of experience which I think every woman should have, to travel alone. That teaches you so much in life. इतना confidence आता है। Shivali, that was the first time, I learned, because an Indian woman, Indian scenario, we have grown up. Uh, Men around us, I belong to, as I said, UP and rural India, मैंने बहुत देखा है। हम लोग को बहुत प्रोटेक्टेड वे में रखा गया था। बट इंडिया में या से कहीं भी हम लोगों को एक ये फीलिंग आती थी कि मेन आर नॉट सेफ, women are not safe with men, ये फीलिंग के साथ। बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन यूरोप alone, at stretch of what 5 days a week, at a stretch, पहली बार लगा, men are good यार, ऐसे बुरे नहीं थे, they respected women। ये अवेकनिंग, ये ओपनिंग अप, मैं पहली बार आई कुड सिट एंड टॉक टू अ मैन ओपनली, विच वी कुड नेवर डू हियर। ये सब चीजें जो मैंने वहां सीखी, कितना रिस्पेक्ट देते हैं औरतों को, दैट वाज अ फैंटास्टिक लर्निंग। मतलब मेरे लिए एक नया दौर था वो, mid 35 आज से। एंड ऑल्सो दिस आई टॉकिंग अबाउट 12 years, आज से 12 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। सो मेरे लिए तो बहुत बड़ी लर्निंग थी। एंड ट्रैवलिंग अलोन, अगेन इट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन मी एंड माय हस्बैंड। अरे तुम अपनी वाइफ को अकेले ट्रैवल करने दे रहे हो? अरे आर यू ट्रैवलिंग अलोन? बहुत सारी चीजें मुझसे वहां पे पूछती है, यू आर इंडियन वुमन ट्रैवलिंग अलोन, आई होप इट एवरीथिंग इज ऑल राइट। ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज ऑल राइट। या, we form judgments very quickly, एग्जैक्टली। very मतलब एक quickly. इंडिया की हैं और आप एक औरत है, आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं, दैट वाज आल्सो, उनके दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क था। बट आई Yeah. होप दे नो कि एक इंडियन वुमन अकेले ट्रैवल कर सकती है और सेफली आ सकती है अपने घर।
Yeah, in your very interesting book, This Power Women, you have written about different personalities, and of course, it's all related to Indian politics. And what was interesting was, like we say, ki bhai, politics is a very controversial topic. And when women get into it, so there is a like, they become actually so-called God's favorite child, if I may say. At that point of time, there's all limelight on them, spotlight actually, spotlight is on them. So everybody starts to judge them, everybody wants to put them down, because somewhere aaj hamari, whatever said and done, we do have a male dominated society. Okay. And you have written about so many people here, right from Srimati Indira Gandhi to different leaders. uh, इसको जब मैं पढ़ रही थी ना, इसमें मैंने एक चीज सब लोगों में कॉमन देखी. दे आर as simple as As us, normal? as normal as simple as us. छोटी छोटी ख्वाहिशें, छोटी छोटी बातें, छोटी चीजें जो उन्हें खुशी दे सके. खुशी, pleasure You know, देती हैं. Yes, हाँ, yes. बिल्कुल प्लेजर देती हैं. I mean, And that is actually, what I यार. wanted to bring out. Yeah. Yeah, and it is so beautiful. मतलब भाई कोई राज कपूर को लेके ऑब्सेस्ड है, कोई पेट्स को लेके ऑब्सेस्ड है. छोटी चीजें जो खुशी देती है, भाई जिसका पेट मर जाता है उसको भी दुख होता है. you know and हमें लगता है कि oh, somebody is in politics and they are like beyond, they are so different, they are not they are little inhuman, if I may say. That's what people perceive, कि ये लोग बड़े Absolutely. पत्थर दिल के होते हैं. मगर जब आदमी जब ये सब पढ़ता है, तो लगता है कि नहीं यार, ये भी हमारे जैसे ही हैं. इट्स जस्ट दैट Yes. हम हमारे तसव्वुर में हम इनको वहां बिठा देते हैं. जैसे मैंने कई बार पब्लिक उसमें डोमेन में देखा है that especially with actors, when they're suffering with something personal at their end, I think we don't even understand, we don't give them space. We can't give them space, we can't let them be. We are so quick in passing our judgments, we are so quick in saying all nasty things that we say at that time. um, I think this has only taught me that no, they are people who are very sensitive as well. And you have brought out this beautiful, sensitive side of all these women, all these powerful women. Okay. And जब हम बात करते हैं about Shakti, when we talk about power, right from, when we were growing up, we heard of Rani ki Jhansi, you know. But of course, there was a sensitive, thing Person behind the Shakti. behind that. And Even talk tell me about, something more about. Yeah, let's start with Shakti only. Even yeah, आप दुर्गा की ही बात करें, वो दुर्गा कब बनी? जब yeah. उसने उस राक्षस को मारा, वो Raksha. काली कब बनी? तो उनके पीछे एक औरत थी पहले. Yeah, उस true. शक्ति के पीछे भी एक औरत होती है. औरत का शक्ति रूप तब निकल के आता है when she is brought to the edge of something in life. Otherwise, True. God has made us as very compassionate. Biologically, a female is a very different creature. जिसको हम कहें कि हम लोग बहुत compassionate होते हैं. हर औरत में एक माँ होती है, लेकिन when you are brought to a edge, then you do things differently. That's true. I agree with you completely. I think Yeah. when somebody is pushed, Yeah, pushed. So what happens is, now let's talk about the book that you mentioned. So I have in this book tried to bring a Shakti aspect of each woman. I have not gone in the negative aspect. Any politician, a politician is a bad word. मतलब लोग सोचते हैं अरे करप्ट होगा, अरे गंदा आदमी होगा, या गंदी औरत भी होगी. Now women are entering politics in बहुत सारे तरीके से औरतें बहुत आ रही हैं. पर हम लोग हमेशा उनको बहुत गंदे लाइट में, बहुत गंदे एस्पेक्ट में देखते हैं. But you know that I belong to a political family, and I saw my father. He was a very, very honest politician. He never earned a penny out of politics. So, and then I saw a lot of women who wanted to come in politics.
but their struggle was much, much more. So that is when I thought to write about these women. Not मैंने वो struggling women के बारे में नहीं लिखा क्योंकि उन्हें कोई पढ़ेगा नहीं अभी. Uh, बड़ा नाम, success is glamorous. It's a very old saying, success is Yes, glamorous. So people like to read about successful all of people. successful Yes. people. Yes, So absolutely. if we talk about Indira Gandhi, a Mayawati or a Phulan Devi, Sushma Swaraj, Sushma Swaraj. हम लोग हमेशा उनका जिस मुकाम पे वो पहुंच चुकी हैं वहां देख रहे हैं, बट वी हैव स्टिल नॉट सीन द स्ट्रगल्स. व्हाट मेड देम अ मायावती, व्हाट Of course. मेड इंदिरा गांधी उनका बैकग्राउंड. सो ऑफ कोर्स बहुत सारा कुछ लिखा गया है, बट मैंने बहुत कंसाइज तरीके से आई हैव मेट मेनी ऑफ दीज वुमेन, ऑल थैंक्स टू माय फादर. तो बहुत सारी लोगों को मैं इन औरतों को हम मिल चुके हैं, पर उनके स्ट्रगल्स, बट आप देखिए स्ट्रगल के अलावा, एज यू पॉइंटेड आउट राइटली शेफाली, दे वर women, they liked शम्मी कपूर के गानों पे उनको भी मजा आता था, यू नो. दे जय ललिता had a crush on शम्मी Yes, कपूर. I know, and I read and that. and Thanks to and you. Thanks to you, actually, I read so much about these women. yes, I would have never known. yes, Phulan Devi, how she was badly damaged. That is how she became a dacoit. She was damaged from the age of 11. You know, Imagine. हम आज सोच के हम कांप सकते हैं, कांप जाता है, कोई भी कांप जाएगा कि 11 साल की बच्ची के साथ क्या क्या हुआ. एंड देन इट कंटिन्यूड टू हैपन. दैट इज व्हाट मेड फूलन देवी फूलन देवी. बट उसको शाहरुख खान की पिक्चरें पसंद थी, उसको रुदाली का वो गाना पसंद था. तो Right. सुषमा स्वराज, आई ब्रॉट आउट दिस थिंग इन ऑफ सुषमा स्वराज, हाउ शी लव्ड एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी. वो अपने कपड़े कोऑर्डिनेट करके पहनती थी कि सोमवार है तो आज व्हाइट्स होने चाहिए, वो खाती थी. सो दीज थिंग्स of any person, and say about any woman, like I get intrigued. I love these kind of conversations, and I love to know about anyone कि आपके पीछे का क्या स्ट्रगल है, आपके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है जो आपको कहीं भी पहुंचाती है, वो क्यों पहुंची, आप कैसे पहुंची. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेनु, जब हम सक्सेस की भी बात करते हो, सच पूछो तो कहानी जो होती है, जो असली कहानी होती है, इज नेवर इन द सक्सेस. इट्स ऑलवेज इन द फेलियर. फेलियर के बाद जब आप स्ट्रगल करते हो, that is the Exactly, real story. And then exactly. after struggle, you succeed. This Yes, completes your story. For absolutely. everybody, it completes your Nobody story. will, nobody wants to talk about the failures where that person may have failed. Any person may have failed once, twice, thrice, or maybe 10 times. And Yeah, then suddenly people talk about and then be judgmental. So that is a sad part of being a human being, honestly speaking. But yeah, that is a sad part. But failures is what make you. absolutely. I mean, today when I see, oh, we feel that, oh my God, the soul has so many scars. But if you really ask me, uh, these scars make you. Every Absolutely. experience in your life teaches you, good Totally or bad. agree with I'm that. not commenting Totally on. agree with that. Totally Not agree with that. एंड जिंदगी में हर चीज से कोई आदमी सीखता ही है. बट वेनु, मेरे को कई बार लगता है, और मैं पहले भी तुमसे बात कर रही थी इसके बारे में, मुझे तुम ये बताओ कि भाई, एक औरत दूसरी औरत की इतनी बड़ी दुश्मन क्यों होती है? लाइक मैंने देखा है कि हम एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते. आई कीप टेलिंग पीपल, लेट्स हैंड होल्ड ईच अदर एंड मूव फॉरवर्ड. मगर सच पूछो तो ये कहानियां ही जाती हैं, बिकॉज थोड़ा सा आदमी सुनता है कि यार देखो, इसने किताब लिखी है, ये अच्छा करियर ले. अरे यार छोड़ो. व्हाई इज इट लाइक दैट? So 50%, 80%, I don't know, 50% are definitely jealous of women. 50% are the other strong women. I will not say कि अब बहुत सारी, like you and me, I definitely am very happy with anyone's success. And Yeah. especially if a woman is successful, I feel extremely happy. चाहे वो मुझे stranger ही क्यों ना हो. Like on my Instagram now, I'm just extremely happy and repost कोई भी औरत कहीं भी successful हो, I'm very happy. But believe me, what you said is absolutely right. You enter a room, you will be scanned from top to bottom by a woman first. क्या Absolutely. पहना है, क्यों पहना है, इसके पास ये कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है. That I don't know, maybe we should talk about it or not, but are we a jealous this thing? I don't know, but I'm not.
I feel very happy. I one thing I have put in my personality by learning from other women, or what, I don't know where I learned it, but even at an airport, even at a public space, if a woman is wearing a nice sari or a nice piece of jewelry or doing something nice, I make it a point to go and Compliment. compliment her. Like I remember recently, I went to a woman. She was knitting. आई वेंट टू हर, आई सेड लवली, यू नो आजकल हम लोग गाँव में ही देखते हैं कि बैठ के कोई निटिंग कर रहा है, हम लोग उसको एप्रिशिएट नहीं करते, वुमन निटिंग। आई लव, आई अभी किसी जगह मुझे कोई एक औरत मिली, शी वाज वेयरिंग अ लवली ओरिसा साड़ी, आई मीन लवली साड़ी यू आर वेयरिंग, यू नो, इट जस्ट गिव्स अ क्विक किक टू अ वुमन कि अरे यू नो अच्छा, you हाँ, know, somebody else is appreciating. beautiful So feeling, I think beautiful. every woman should appreciate the other woman's effort of doing anything. उसको एक कॉन्फिडेंस फॉर इवन फॉर दैट मोमेंट, एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम ही लोगों से एक दूसरे औरत में आनी चाहिए, और वो बहुत जरूरी है ये चीज अपनी पर्सनालिटी में इनकलकेट करने के लिए। दैट्स ट्रू। अभी कुछ टाइम पहले तुम बात कर रही थी ना अबाउट दिस द पॉलिटिशियन स्वराज, सुषमा स्वराज जी, या, एंड यू मेंशन कि भाई उनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत शौक था, है ना? यस, यस, तुमको भी बहुत शौक है, मुझे मालूम है। yes, I probably this also came from my father because he believed in muhurat and astrology. वो पढ़ते भी बहुत थे, उनको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज भी था। सो आई मुझे लगता है कि कुछ तारों का कमाल होता है कई बारी। मेरा एक बहुत डियर पर्सन है, आई विल नॉट नेम हिम, ही बिकेम अ वेरी बिग पर्सन इन बॉलीवुड, एंड अच्छा। सडनली फ्रॉम दैट, हाँ, और वो सडनली फ्रॉम बीइंग एट द टॉप, and he fell like dhar. And Oops. I met him after that, and you know, I was speaking to him. So he said, Venu, I got intrigued by politics and by stars, कि क्या क्या होता क्या है, मैं इतना ऊंचे मुकाम पे था और मैं कैसे गिरा। तो मैं, मुझे भी मजा आ रहा था कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज यू नो, मैंने मेरे फादर से भी मैंने ये, ही सेड यस, कब तारों का कमाल होता है, कब आपके तारे आए खराब, आपको किसी खराब फेज से आपकी लाइफ में ले जाते हैं। बट आई फील एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ बिग अम्ब्रेला, जो आपकी जिंदगी में होना है वो होके रहेगा। बट अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो इट इज लाइक अ अम्ब्रेला, वो आपको थोड़ा हार्श सनशाइन से तेज धूप से बचा देगा या तेज बारिश से बचा देगा। पर अगर वो आंधी तूफान आपकी जिंदगी में आना है तो वो आके भी रहेगा, पर थोड़ा सा शायद आपको बचा ले जाए। दैट इज द रोल ऑफ दैट्स एस्ट्रोलॉजी। बट यस, आई बिलीव कि डेस्टिनी होती है एस्ट्रोलॉजी, बट हार्ड वर्क भी होता है कि वो वापस, आज वही जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, वो वापस अपने हार्ड वर्क से, या हो सकता है कि तारे फिर बेटर हैं, वो वापस अ, आज बेटर स्टेज ऑफ लाइफ में वापस हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। डेस्टिनी, वेन्यू। कर्मा, किस्मत इज इम्पोर्टेंट। Yeah, it is important, but as you very nicely said, that by hard work is also very important. ओ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आप You सोचे कि आपकी किस्मत you आपको have सब दे to have जाएगी तो, certain amount of dedication, certain amount of determination, grit to do something. That's very important in life. अब आप उसके मेरी बिना किताब के बारे में ही, या यू सी द ग्रिट, द कट्स ऑफ दीज ऑल वुमेन विद द काइंड ऑफ स्ट्रगल, तो उनकी डेस्टिनी रही होगी कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनना होगा, वो उनकी किस्मत में रहा होगा। बट द काइंड ऑफ हार्ड वर्क इंदिरा गांधी डिड, और ममता बनर्जी डज, और यू नो, these women, स्मृति ईरानी, for say what a multi talented woman she is, तो इनके हार्ड वर्क का कोई हिसाब नहीं है। द काइंड ऑफ एनी हार्ड वर्क कैन टेक यू, यू नो, टू प्लेसेस। सो that's दैट true. इज वेरी इंपॉर्टेंट। के बारे में तुमने लिखा है, तुम्हारा कोई पर्सनल फेवरेट तो होगा ही। All are my personal favorite. I when I was writing this book, मुझे लगा कि मैं किसको छोड़ूं किसको लूं, यू नो, सो आई हैड टू एंड, बिकॉज वो बहुत जब बहुत ज्यादा बड़ी किताब हो जाती तो पीपल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, बिकॉज यू नो पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीबॉडीज फॉर्टे। तो दैट्स ट्रू। मुझे लगा किसको लूं, किस, तो मैंने बहुत कम एंड मॉडर्न इंडिया की औरतों को ही लिया है। I cannot pinpoint, but of course, coming back to Phulan Devi, you know, because kind of
काइंड ऑफ atrocities she faced and what she, मतलब भगवान न करे किसी भी औरत को वो जर्नी लेनी पड़े टू रीच वेयर शी रीच्ड, मतलब पावर कॉरिडोर्स की किताब है इसलिए हम बात कर रहे हैं। भगवान न करे किसी भी लड़की को ये सब फेस करना पड़े। अ, बहुत सारी औरतें हैं द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स। आप देखिए इनकी स्ट्रगल देखिए, दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, थ्री Electric. टाइम्स चीफ मिनिस्टर, what a learned lady, what a, sophistication, a polished lady, but see her struggles, it's amazing। तो ऐसा नहीं है कि कोई औरत अ, पढ़ी लिखी है या पढ़े लिखे खानदान में शादी हो गई है तो उसके स्ट्रगल्स नहीं है। आई Oh थिंक अ yes, स्ट्रगल इज एवरी डेज battle of a woman, believe me, every that's. day a woman goes through some struggle। I completely agree with you. No, I have realized that Venu, when we talk about biases, आज जो हम सोचते हैं biases, आज भी मुझे लगता है it's very difficult in the work environment, especially in corporate world, how women go through certain amount of biases, and how Oh do they yeah, break them? That is the yeah। question. How do they break them? That uh, is, I don't so know, i like, think you talk about it. I think you're talking about gender biases and gender inequalities still which persist Yes, I'm आज talking की, about gender biases. Yes. and it leaves me sad। This question is very close to my heart because आज भी हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, 20वीं और 21वीं सदी की बातें करते हैं, पर आज भी औरतों को जेंडर इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ता है। आज भी आई विल पुट अ, मतलब एक बहुत छोटा-सा वाकया मैं आपको बताती हूँ। ये 2019 की बात है एंड आई वाज़ स्टेशन्ड फॉर 2 मंथ्स इन इन अ प्लेस कॉल्ड बांदा। इट्स बैक ऑफ बियॉन्ड ऑफ बुंदेलखंड, यूपी, छोटा-सा शहर, यूपी का एक छोटा-सा शहर, एंड it's the biggest constituency as per uh, uh, politics, and one of the biggest districts also, but back of beyond बुंदेलखंड में आता है। सो वहां पे जब मैं अपने फादर की कैनवसिंग के लिए गई हुई थी, आई वाज लिविंग देयर। तो इवन ड्यूरिंग कैनवसिंग आई हैड टू आस्क कि औरतें कहाँ हैं, हमें आदमियों के बीच में ही, तो कई बार हमको अंदर कि अच्छा घर के अंदर चली जाइए आप औरतों को मिलने। अब आप सोचिए आज भी औरतें अंदर हैं, हमें उनसे मिलने अंदर जाना है। 80% of India is still rural, let's face it, and हमें उनसे अंदर जाना है। So one of this household I went in, so अब आप सोचिए वहां हम अंदर जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। The mother-in-law met me. She was a principal of a government school, retired principal of a government school। The daughter-in-laws came with tea and all, and they met me very nicely। तो मैंने बड़े प्यार से पूछा, आप क्या करती हैं? तो before she could answer, the mother-in-law again answered, she is MA in English। अच्छा जी, very good। तो अभी आप क्या कर रही हैं? नहीं कुछ नहीं, अभी असल में ना बच्चा नहीं हो रहा है तो हम वेट कर रहे हैं कि बच्चा हो जाए। It was sad, I came out of that house, of course, because it was a canvassing mode, election mode. I could not open my mouth. I could not prick them on any topic, and especially these topics। But it made me sad कि एक पढ़ी लिखी औरत दूसरी पढ़ी लिखी औरत की सास है, and she is just making her bahu sit at home। Why? Because she could not produce a child for the family। आज भी हम इसी दौर से गुजर रहे हैं। This is it makes me very sad। I'm not talking about anyone, let me talk। I am saddened by these kind of जब ऐसी चीजों मेरे सामने आती है, मुझे लगता है मैं क्यों नहीं उसको कुछ उस औरत की हेल्प कर सकती हूँ कि ठीक है, जब ठीक है बच्चा नहीं हो रहा है, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, आई विल नॉट गो इनटू दैट। हो जाए तो बहुत अच्छा, आपकी मर्जी है, नहीं है वो सब एक, ये सब भी आजकल नई चीजें निकल के आ रही हैं कि बच्चा पैदा करना है नहीं करना है कैसे करना है। आई विल नॉट गो इन दैट, बट टू मेक हर सिट, एमए इंग्लिश में तुम बैठी हो घर में इंतजार कर रही हो। एक ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है, आप एक पढ़ी लिखी एक वर्किंग ब्रेन को घर पे बिठा के रखा है। Venu, सैडन्स मी, यहाँ पे टोटली मुझे सैडन्स मी। यहाँ पे मुझे लगता है कि
education does not come only from going to a school or an institute. You So have it to is be mindset. you have to be Yes, modern from here, not from your clothes. A lot of people I have absolutely. seen, they wear the most modern clothes, but But when they they speak, when एब्सोल्युटली तो आजकल हम they पोस्टर्स babble, देखते हैं रोड पे, पोस्टर्स देखते हैं रोड पे, एटिकेट स्कूल, तो उसके बगल में एक लड़की आएगी फ्रॉम अ साड़ी, एंड एटिकेट सीखने के बाद शी इज वेयरिंग जीन्स. If this is modernism, I'm sorry, this is a bad way to go. Exactly what you said. सलवार कमीज पहनने वाली लड़की को, साड़ी पहनने वाली लड़की को आज भी पीछे देखा जा रहा है. Whereas yeah, it's as you sad. rightly pointed Sad. कि I have बेस्ट seen ऑफ so क्लोथ्स many पहन के times. भी आपका दिमाग बिल्कुल बंद है, तो नो यूज, नो यूज अरे, ऑफ सच एजुकेशन की. I have seen a lot of people कोई सूट पहनता है या साड़ी पहनता है, to quite an extent they're still considered bhenjiyan. शिफाली, It's आई हैव sad. फेस्ड दिस, आई हैव I फेस्ड दिस, faced दैट it इज too. व्हाई. I faced it too. So यस. मुझे मालूम है. मैंने आपको अपने ओपनिंग में शुरू में ही बताया कि देखिए, आई हैव कम फ्रॉम अ लैंड ऑफ सलवार कमीज साड़ी टू लैंड ऑफ वेर एवर, एंड अ लैंड ऑफ नमस्ते एंड पैर छूना टू लैंड ऑफ hugging and kissing. Of course it's not bad if the hug and the kiss is absolutely fine, that's absolutely normal. बट यू नो टू लुक डाउन, अगर हम किसी का पैर छू रहे हैं या किसी को, बिकॉज आप अपने किसी कल्चर को लुक डाउन कर रहे हैं. वी आर फ्रॉम इंडिया, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर. हम आज भी नमस्ते कर रहे हैं, आज भी पैर छू रहे हैं, दैट इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू. एंड True. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कल्चर एंड हाउ आई बीन ब्रॉट अप, कि हम अपने एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कैसे हम बात करने की तहजीब है हमें, ये दैट इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट. द women are all about, the men are all about, कि हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है. Unfortunately, I think these are things we have picked up from the West. But there are so many good things to pick up from the West as well. वो नहीं हमने सीखा. एग्जैक्टली, हमने वो ये नहीं नहीं सीखा. सीखा कि टाइम टाइम भी कोई चीज होती है. ये नहीं सीखा हमने. मगर बिल्कुल ये नहीं, बस कपड़े सीखा पहन लो और कि ऐसे बात कर लो और ऐसे निकल लो. अगर हमने ये सीखा है तो गलत सीखा है. बट नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, अभी भी हम लोग अपने आप को बदल सकते हैं. आई डेंट चेंज माई लैंग्वेज. आज भी अरे तुम तो हम करके बात करती हो. हमने कहा यार, बिकॉज वो मेरे शहर की भाषा थी. व्हाई शुड आई लीव माई, आई एम वेरी गुड एट हिंदी एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एट हिंदी. मतलब मैं, हमें आज भी हिंदी बात हम बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं अगर हम हिंदी में बात करते हैं. ऑफ कोर्स ठीक है, इंग्लिश आ गई एक, वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है. इनफैक्ट अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या एक चीज है जो तुम लाना चाहोगी, एक थर्ड लैंग्वेज, तो मुझे यही लगता है कि जब हिंदी और इंग्लिश ही मुझे आती है, तो व्हाई नॉट speak both of them confidently. And so Shifali, when I was reading, I'll tell you this aspect of my life also. तो किसी ने बोला कि तुम्हें सिर्फ दो भाषा आती, तुमको दोनों को अपने को शार्प करना चाहिए. हमने कहा बहुत है. तो उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम एक हिंदी पढ़ा करो बुक, एक इंग्लिश पढ़ा करो. एंड अरे वाह. उस समय व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू रीड वन इंग्लिश नॉवल एंड वन हिंदी नॉवल, हाउ ताकि मेरी इंटरेस्टिंग. हिंदी भी उतनी, क्योंकि मेरे को कोई थर्ड लैंग्वेज आती नहीं थी, ना पंजाबी ना तमिल ना कुछ. तो मैंने कहा हिंदी. आई हैव रेड बुक्स लाइक राजकुमार भ्रमर की महाभारत की 16 सीरीज पढ़ डाली थी मैंने. सो वाह. या सो जो चीज आपको आती है उसमें ही बेहतर बनो ना. क्यों आप कोई नई नई चीज, ठीक है बहुत अच्छी बात है कि नई चीजें सीखो, पर अपनी जो चीज अच्छी है उसमें ही खूब कॉन्फिडेंट हो जाओ. ये एक लड़की का ये एक महिला को जरूर सीखना चाहिए कि जो आपको आता है उसको खूब अच्छा कर लो. या सी एक बारी मैंने कहीं कुछ पढ़ा था वेनु, वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी. वो कहते हैं यू कैन नॉट बी द फर्स्ट. You cannot be first at everything. It's not possible. In fact, anything, a lot of times. But you can be best at what you do. That एग्जैक्टली. is it. और हम लोग So, आज की दुनिया में हम लोग प्रूफ करने पे लग जाते हैं. लेट मी बी बेस्ट, लेट मी बी फर्स्ट. व्हाई? जस्ट बी गुड, जस्ट बी पीसफुल, जस्ट बी हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग. absolutely, I completely agree with you. और पता है यस, क्या, जब तक हम अपनी छोटी छोटी चीजों में प्राइड नहीं लेंगे, दूसरा आदमी क्यों लेगा? कभी नहीं लेगा. एग्जैक्टली, So एग्जैक्टली, whether you wear a salwar kameez, whether you wear a sari, whether you wear trousers or whatever you like, if you're comfortable in it, please wear it and feel empowered. Feel एग्जैक्टली. like, yes, I'm enough as a woman.
So but we have Exactly. no right anybody has to put somebody down who's wearing a salwar kameez, क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है. कोई भी. एग्जैक्टली. आई फील कि आप जो भी करो विद कॉन्फिडेंस एंड विद हैप्पीनेस करो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो या सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, just be happy and peaceful in whatever you're doing. Don't try to go out and prove to someone. Prove to yourself first. या That बिकॉज is very प्रूफ important. एंड ही नहीं है ना, प्रूव करने का कोई एंड नहीं है. क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं मैं चलो इस इंसान को इस चीज के लिए खुश कर दूं, मगर वो इसकी खुशी, उसकी खुशी, तीसरे की खुशी, खुद की खुद खुशी. खुद की खुदकुशी. यू आर एब्सोल्युटली राइट. दूसरों को खुश करना इज खुदकुशी करना. सो हाँ, फर्स्ट बी हैप्पी विद योरसेल्फ. दैट इज इम्पोर्टेंट. इट्स Of course, वेरी a lot of वेरी. women don't get this choice. A lot of women don't get this choice, but believe me, that is what a role of a strong woman is. Ki don't uh, look down on them, pull them up. Empower them, pull them up, Exactly, pull them hold up. hand, hold hand. If not anything else, you can be a good listener. Exactly. ठीक है, Yeah, आप कहीं भी बैठे हो, आप किसी से तो अच्छे हैं. Don't compare yourself with the ones who are much ahead of you. ठीक है, that is, be that ambitious enough कि ठीक है हम आज यहाँ हैं तो कल हम वहां पहुंचे. लेकिन yeah. आप जहां भी हैं, आप किसी से अच्छे हैं उस दिन. उस दिन आप किसी भी दूसरी औरत को हेल्प करिए. बी अ गुड लिसनर, ट्राई टू डू समथिंग फॉर देम. आपकी हाउस हेल्प है, आपकी बहन है, आपकी फ्रेंड है. Some struggles they are going through, try and bring them up. I think that's very important. As a woman, we should actually, move forward and help other women because कहते हैं कि वैसे तो हर इंसान की आवाज होती है, मगर कभी कभी दूसरे इंसान की आवाज कहीं दब सी जाती है. तो अगर आप किसी की आवाज बने, तो इससे बड़ी बात नहीं होती. बिल्कुल. एंड यू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आवाज देना भी कई बारी, जैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि sometimes I never used to talk about my social work. I जैसे वो बचपन में सुना था ना कि नेकी कर और कुएं में डाल. करिए बट डाल. देन, हाँ, बताओ मत. चैरिटी करके अगर आप अगर आप अपने आप को वो हाईलाइट, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हाईलाइट कर रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट. बट कमिंग टू द पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग, मुझे किसी ने बोला, वेनु, द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, अगर तुम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करोगी तो और कुछ नहीं, दूसरी औरतें तुमसे सीखेंगी. Believe me, Shifali, I started highlighting my social work just to encourage these kind of women, जो कुछ करके डरती थी या करने में डरती थी. So that is when, last 5 years or maybe last 2 years, I started telling people about my charitable work or social work, कि हर औरत कुछ ना कुछ कर सकती है, हर इंसान. Let us not talk about any gender. Of course, women we are talking about on Women's Day, इसलिए औरतों को bring up करना, today it is definitely our responsibility. आज But हमारा दिन है भाई. yeah, आज हमारा दिन है. But for any human being जो जरा भी डरते हो या जरा भी हिचकते हो, not डरना but हिचकना is the right word. तो अगर वो किसी से कुछ सीख के अपनी हिचक को किनारे कर सकते हैं तो why not. So that is when I started highlighting little, अपने कुछ कामों को मैंने हाईलाइट करना शुरू किया कि अगर कोई इससे कुछ सीख सकता है तो why not. So I'm glad you started doing this because मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था वेनु. इतने साल मैंने काम किया, you know exactly what I was I doing. know, yeah, you've कभी done wonderful work. मैंने कभी पिक्चर्स नहीं लिए, कभी कुछ किया ही नहीं नहीं था, डाला. कुछ डाला ही नहीं था, क्योंकि कभी नहीं. हाँ. ध्यान ही नहीं आया. बट अब जब वो कहते हैं जब रियली वर्कर टाइप की लाइफ हो गई है हाँ. तो हाँ. सब पूछते हैं भाई तुम करते क्या थे और प्रूफ क्या है. मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, मैंने तो कभी मुझे तो फोटो. बहुत पुरानी पिक्चर्स निकालनी पड़ती, लोगों से मांगनी पड़ी. आई हैड कम टू दैट इवेंट, डू यू हैव एनी पिक्चर्स, कैन यू, बिकॉज ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया कि हम लोग अब हाईलाइट कर पा रहे हैं. बट यस, बिकॉज दैट इज हेल्पिंग अदर्स नाउ कि चलो ये काम किया, ये प्रूफ है. हाँ, नहीं, और वो ही नहीं, वो कहते हैं आजकल आजकल हर चीज थोड़ी कमर्शियलाइज्ड हो गई है वेनु. बहुत दैट इज ज्यादा. वो कहते हैं ब्रांडिंग कि योरसेल्फ, जो सेलिंग योरसेल्फ, दैट इज वो अ कहते रॉन्ग हैं पार्ट दिखता ऑफ है वो सोशल बिकता मीडिया. है. बट या. हाँ, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है. तो आप अगर
ये कर रहे हैं उसमें 4 चीज़ें और जोड़ें, मगर वो बात है ना कि हम लोग थोड़े ऑनेस्ट टाइप के हम डाल नहीं सकते। मुझे यू नो अभी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी भी नहीं पसंद है कि हम अपने काम को बहुत हाइलाइट करके और बढ़ा-चढ़ा कर जैसे लोग बताते हैं, बिल्कुल नहीं। सो मैंने तो लास्ट अभी बिकॉज़ ऑफ दिस बुक आई हैड टू बी ऑन सोशल मीडिया। उसके पहले कोई मेरा इंस्टाग्राम पेज देखे मैंने तो अपनी कोई तस्वीर ही नहीं डाली है। बट उसके बाद डालनी पड़ गई कि आई एम मीटिंग दिस वन या दैट वन एंड उसके पहले भी मिल रहे थे बट पर हमने कभी नहीं डाली ये सब चीज़ें। उसके पहले बट भी हमने बहुत काम किया लेकिन तुमने काम बहुत किया एंड आई रिमेम्बर शुरुआत में मुझे याद है यू हैड स्टार्टेड विद बैग्स, instead of you were against poly bags. I still remember, okay? I यस, still remember यस। you were against poly bags and you said, "Bhai, मैं थैले ले लो मुझसे." I remember this, and I was like, and first time मैंने देहरादून में I had, social scene वहाँ का बड़ा different है. You know that. I don't want to get into या, that. my या। my whole idea is not to get into the social scene and talk about it, but मुझे लगा था कि there is this woman who is talking little different than what I was hearing others. And I was like, I'm sure, and I was very intrigued at that time when I looked at you, Venu. वहां से शुरुआत करी थी तुमने और तुम आज यहाँ यहाँ इतने सालों में यहाँ तक पहुंच गई हो, यहाँ तक। And अब मैं इस किताब को जिस दिन मुझे ये मिली, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट यू हैड रिटन, आई वांट टू रीड. Says, dear Shifali, presenting my book is a privilege for me to a great friend that I seen you. Love and warm regards, Venu. This is so precious to me, I can't even tell you, Venu. And I थैंक यू really, really शिफाली, hope this book does wonders. And you will, of थैंक course, यू। हम और भी बुक्स का वेट करेंगे, तुम लिखोगी और हम पढ़ेंगे. So, please, I would want you to tell a little bit about your book before we wind up to our viewers and where people can order this book. So this is my debut book. I uh, uh, put it on Amazon and Kindle both. It has been it has got a praise from Dr. Shashi Tharoor. Uh, Dr. Shashi Tharoor himself praised this book. And then I have got testimonials from women because this is a women centric book. So I got testimonials from 5 very, very powerful women in their fields. So their testimonials is here. And of course, then I covered 16 other powerful women. So very, very women centric book, not bringing out any controversies of the political side of those people, because I wanted to bring out the positivities of a woman and positivities of a politician, woman politician. I'm trying to bring out the Durga aspect and how they have gone to that edge to become the woman they have become. Of course, this book is dedicated to my father and my sister-in-law, whom I lost very recently. Both of them left us, and this book is also dedicated to all the women, very strong women who sometimes uh, cannot start doing something. They are still struggling, but they are very strong in their own rights. I feel any housemaker, uh, any homemaker is also a very strong woman जो कुछ करना चाह रही है पर नहीं कर पा रही है. So life can start any day for you, the day you want. This is a small message I will put for any woman. Just follow it with passion and confidence. Whatever gives you happiness, try and do it. Take a small step. I have taken very a small step, as Shifali said. मैंने 15-20 साल से पॉलिथीन के अगेंस्ट, पेड़ों को बचाने के अगेंस्ट, पानी को बचाने के लिए काम करना, स्पैरो को बचाने के लिए काम करना शुरू किया था. That is one side of me. Spirituality is one side of me. Taking pictures on phone is one side of me. But believe me, politics brings sparkle to my eyes still, and women in women doing anything in any field, believe me, मुझे बड़ी खुशी होती है. तो इसलिए I am the other side of the 50% who becomes very happy for any other woman. So any woman hearing this,
बिलीव मी, मुझसे जो भी हेल्प होती है, जो भी एनकरेजमेंट मिलता है, लव टू डू दैट फॉर यू. That's a beautiful message, Venu, I must say. वेनु, समवेयर यहाँ पे बैठे बैठे, वैसे तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं आता, पर यहाँ पे बैठे बैठे मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वेरी सून आई थिंक समवेयर आई विल सी यू इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. Lot of people do tell me that, but yes, given a chance, I would not have any hitch, because um, नाली को साफ करने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं. और अगर मुझ में ये टैलेंट किसी को दिखता है कि मैं पॉलिटिक्स में घुस सकती हूँ, so why not? I will definitely, without a hitch, try and go and be the change what I want to see. एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग यू जस्ट सेड. एंड सच में अगर कोई चेंज और या ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं, तो हमको खुद से ही चीज की तरफ बढ़ना पड़ता है, बिकॉज नो बडी, वो कहते हैं आपको चवन्नी डालनी ही पड़ेगी वेदर यू लाइक इट और नॉट. आप ये सोचिए अपने कि मैं कदम खुद उठाना चाहिए. एवरी पेनी काउंट्स, Counts. Every एवरी ड्रॉप So मेक्स अ every डिफरेंस. drop counts, every step counts. So taking baby steps is nothing wrong for any woman who wants to do something in any field they want to do. Take baby steps. Don't run the first day, don't walk the first day, but keep crawling. I have crawled. Absolutely, Believe me, I absolutely. have crawled, Shipali. You have crawled. I've seen your journey as well. And believe me, I'm so proud of you to a person you have become from what we were. We both have seen each other in our young days. Matlab, we are not old. We are still young. We're And we have growing, we're growing, just like trees. We're growing. we are growing. But yeah, we are growing. We both have taken baby steps in the field you loved, in the field I loved. And we are growing and we love each other, and we will keep encouraging each other. Of course, that's very important because वो कहते हैं कि हर दिन एक सा नहीं रहता, and there are times I may feel a bit low and somebody else may feel but if you're there for each other, that really counts, because जिंदगी बहुत छोटी है, बट बहुत शुक्रिया. वो कहते हैं ना कि जिंदगी जेन्युइनली मिले ना दोबारा. सो आई थिंक वी शुड ऑल फोकस ऑन मेकिंग अ बेटर लाइफ. वी शुड फोकस ऑन who we are actually. It should not be any comparison with anybody else, because only you know how you start your journey and how you go till the end. And what is important is आप अपनी स्टोरी को बेटर करते रहो. And the minute you decide to do that, believe me, life becomes beautiful. And you're so focused, घोड़े वाला हाल हो जाता है, because you're wearing blinders and you are just focusing on your own Absolutely. self, only on Absolutely. self, only on self, only on your own growth, and that really helps in the long way. Absolutely. Absolutely. I agree with each and every word That's of the yours. wonderful thing that we spoke today, and I'm so thankful to you, Venu, that you took out time. So, thank you, viewers. I am sure you will learn such a beautiful thing from Venu's story, because as I always say, one story can transform the life of many people, and it can also become a manual for many. So, please share this story. Please buy this book, Power Women. I seriously mean this, that I have enjoyed this book very much, because I learned so much about these women who were around us. So, thank you, everybody. Have a good week. Bye for now. Thank you so much, Shifali. My privilege, my honor.